नेम है आयशा। तो आज हम जिसके ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं, फर्स्ट टाइम हम लोग देखने वाले हैं जॉन जोन्स की जो है ना एडिट्स मैरिन एमएमए की काफी आप कह लो टैलेंटेड प्लस कंट्रोवर्शियल माना जाता है इनको ना। सो लेट्स सी, देखते हैं क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम रिएक्ट कर रहे हैं और ऐसा हमें इनका पता भी नहीं है, तो वीडियो के अंदर हम लोग को ऑब्वियसली जर्नी से जो है ना थोड़ी सी मिल ही जाएगी देखने को। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करें। Who's your top MMA fighters of all time? Jon Jones, fuck. Nobody's like him. He beats the monsters. Oh, OMG. क्या तुम जानते हो यूएफसी की हिस्ट्री का सबसे डेंजरस फाइटर कौन है? और नाम है जोनाथन जोन्स, जिसे जॉन बॉन्स जोन्स भी कहते हैं। जॉन का यूएफसी करियर ही स्टार्ट इनसेन हुआ था। वो 23 की एज में यंगेस्ट यूएफसी चैंपियन बन गया था, क्योंकि जॉन सिर्फ फाइट नहीं करता था, वो अपने ओपोनेंट्स को मेंटली ब्रेक कर देता था और वो ओपोनेंट्स के लिए साइकोलॉजिकल विलेन बन चुका था। ही फियर्स नॉन, और वो फाइटर्स के लिए रेकलेस, ब्रूटल एंड अनप्रेडिक्टेबल बन गया। जॉन ने अपने करियर में 30 फाइट्स लड़ी है, जिनमें से उसने 28 को विन किया। जॉन ने 15 टाइटल्स फाइट को विन किया और उसने 14 फॉर्मर चैंपियंस को हराया। जॉन का फाइट आईक्यू और स्ट्राइकिंग कोई ब्रेक नहीं कर सकता था, बिकॉज इनसाइड द केज वो एक मॉन्स्टर था, बट आउटसाइड द केज उसकी लाइफ बहुत डार्क थी। जॉन की लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब उसकी बाहर की लाइफ खराब होने लगती है, क्योंकि जॉन ड्रग टेस्ट में फेल हुआ, हिट एंड रन केस में फंसा और कई बार वो अरेस्ट भी हुआ। जॉन ने रिंग में तो सबको बीट किया, लेकिन रिंग के बाहर उसे खुद को बीट करना था। एंड ही नेवर क्विट। जॉन ने अपने सेटबैक्स को ग्रेटनेस बनाया। जॉन ने यूएफसी में कमबैक किया और आती हेवीवेट चैंपियन बन गया, इसलिए जॉन को एमएमए का गॉड कहते हैं। एंड कमेंट हु इज योर गॉड, फॉलो फॉर मोर। Jon Jones is a bad guy who's trying to be a good guy. If we were living 1,000 years ago, he would be on a horse with the biggest battle axe, waiting in the back, hacking heads off, and everybody would be running. Jon Jones, I consider Jon Jones the greatest combat fighter of all time. When you talk about the Alis and the this and that, Jon Jones is the nastiest dude ever in the history. Hey, hold for it. How much? Daniel Cormier and I swear, like, I fight out of love. I do what I do surely out of love. But with Daniel Cormier, I think there's a hatred that came out for the first time, where I just couldn't imagine losing to this man, and I got extra workouts on Christmas Day just because I hated him at the time so much and couldn't imagine losing to him. And I know he feels the same way about me as well, and I've heard him say it during an interview, like, I genuinely hated Jon Jones, and it was stressful, and that training camp took a long time, and it probably took a few years off of our lives operating out of so much hate. Who's the best ever? Best ever in MMA? Ever in MMA. It's hard to say. There's a lot of candidates. You know, I've always said Mighty Mouse is one of my best bets. He was the highest level of expression of mixed martial arts ability that I've ever seen. But then there's Jon Jones. Jon Jones really never lost. That's the nasty motherfucker. He's a nasty motherfucker. In the history of MMA, is there someone that is akin to Messi in terms of like a Michael Jordan or a Messi in the MMA? There's a few. There's a few that are in that conversation. I think the number one consensus greatest of all time is Jon Jones. Because Jon Jones just went up and easily won the heavyweight title with a first round submission. Easily. Just took the guy down, strength. सिर्फ 23 साल की एज में जॉन जोन्स became the youngest UFC champion in history, but that was just the beginning of his era. UFC ने जॉन जोन्स को साइन किया था जब उन्हें MMA ट्रेन करते हुए सिर्फ 4 महीने हुए थे, and yet he started making elite fighters look ordinary. जॉन जोन्स का biggest weapon उनकी हाइट या साइज नहीं थी, it was his creativity, elbows, spinning attacks, flying knees, brutal kicks, takedowns. Jon Jones could attack you from literally anywhere. He defeated legends like Rampage Jackson, Evans, Daniel, becoming one of the most dominant fighter the sport had ever seen. Jon Jones ने light heavyweight title को 14 बार defend किया, building one of the greatest resumes in MMA history. He wasn't just a great fighter, he was a fighter who always seemed to have an answer for everything. And maybe that's why people say he was favored by the gods. Oh my God! इतना
The best UFC fighter of all time. Jon Jones. Jon Jones. Jon Jones. Jon Jones, probably. Jon Jones. Jon Jones. Jon Jones. Probably Jon Jones. Jon Jones. Jon Jones. Jon Jones. All time, Jon Jones. Jon Jones. You gotta go with Jon Jones. Jon Jones. That's who I did Hypothetical. The GOAT Jon Jones. Who would win in a street fight in their primes? Jon Jones or Mike Tyson? Jon Jones. That's a stupid question. Really? Mike Tyson. Are you like stupid? This is a street fight. Mike Tyson's a boxer. Prime Mike Tyson could kill a guy. Are you being serious? Prime Mike Tyson could kill a man. Are you being dead serious? I think it's closer than you think. यार ये तो अलग ही सीन हो गया मुझे भी माइक टायसन पे जानी थी हाँ मैं भी If you could choose one person in history to fight literally for your life, who would it be? I would take Tyson before he went into prison. Mike Tyson. Nobody loves Mike Tyson more than I do, believe me. But when you talk about putting two guys in a room, who comes out? Jon Jones has the tools to beat everybody. Hey, Pussy, are you still there? I dare you talk to me like that. You should get up and kneel to me now, and I'll spare you the night of the 28th. I'm gonna make him my wife. I can't wait for the 28th. I'm gonna make you my girlfriend. परफॉर्मेंस में जाने कितनी हाइट है लगती हो रही है If you take a shot, then we go in a war. I'm throwing. Have you met Jon Jones? I haven't. I haven't. Jon Jones is probably 6'5", 6'4", 6'5". Jon Jones's arms are 84 inches apart. His reach. Mine are 72. So like he was taller. Like so even at the same age, he would still be taller. So I think I would be better because I would be younger. But I don't know if I could have been better in Anaheim because I trained so hard because he beat me the first time. I've never been better. When he beat me, that was the best you'd ever been. I'd never been better. I would have beat everybody else in the world in all those weight classes. I was never better than that night. And he beat me. Wow, nice yaar. You'll never see me like this in a fight. Never. I'm always like this. Oh, nice started, bro. तो दिखा भी रहे किस तरीके से होते हो ये भी अच्छा सिखा रहे थे वो एक तरह से मोटिवेशन What was going through your mind when you did that jumping side kick? Looked like you were aiming for Thiago Santos's knee. Oh, you know, my coach teaches us to be malicious. This is combat. I mean, Thiago was trying to break my jaw tonight. He was trying to give me brain damage tonight. And if a guy can give you a stutter for the rest of your life or memory loss, I think an even trade-off is to give him a limp for the rest of his life. That's just the game we play. Okay, the coldest fighter ever. Yeah, but crazy in case scared somebody. Wow. What makes Jon Jones so unique? Okay. Jon Jones is a killer. He's a killer. There is a dark side to Jon Jones. Wow. Look at the when him and Cormier were in that interview. Yeah. And they thought that the cameras were off. Right. And they start talking to each other back and forth. I wish they would let me next door so I could spit in your face. You know, I would absolutely you if you ever did something like that. You could never. Oh, I bet you I could. Then you should try, John. You really should try, John. I would literally you if you spit in my face. Oh. And the way he smiled. Why is a banda dead? Oh shit. You can admit that there's certain people that are much better fighters than you. No, I'm not going to admit Jon that. Bones Jones? Yeah, I'm going to admit that. Yeah. You know Jon Jones? Yeah, he cussed me out real bad last time I was with him. He was real drunk. What happened? He was just intoxicated. I wouldn't have let that go with anybody else, but you know, because it was him. I was like, I know he's drunk. You know? I mean, you wouldn't be able to do nothing with him anyway. Have you met Jon Jones? I haven't. Jon Jones is probably 6'5", 6'4", 6'5". Jon Jones's arms are 84 inches apart. His reach. Mine are 72. When he beat me, I was That was the best you'd ever been. I'd never been better. And he beat me. You watch the video of him and Cormier, and they don't know that they're live being filmed. Oh, my God. And Cormier says, I had to come over there and spit in your fucking face right now. He's actually a professional MMA fighter, Jon Jones. I'm not saying I would fight you. I said I would kill you. Insane.
इंसेन भाई, क्या एडिट्स देखने लिटरली उनकी स्टेट्स, हर कोई जो उनको गोड कर रहा है। कोई बंदा मना भी कर रहा है कि मैं एडमिट नहीं कर रहा, तो वो जब नाम लेते हैं जॉन जोन्स, एडमिट करता हूँ ब्रो। बंदा इन सेकंड्स बदल गया, उसके स्टेटमेंट इन सेकंड्स बदल गया। क्रेजी सीन है इनका। अच्छा, मुझे तो उनका नेम भी अच्छा लगा, जॉन बोन्स करके। जॉन बोन्स जॉन, और वो मैंने सबसे यंगेस्ट कह रहे हैं इनको, एंड देन फिर वो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी जो उन्होंने लाइफ में, फिर वो उन्होंने कमबैक किया तो वो यूएफसी के चैंपियन बन गए ब्रो। यार क्रेजी सीन थे यार, ये हाइट इतनी ज्यादा है। अच्छा, वो भी उनके लिए होगा ना वो वाला फैक्टर यार। हाँ, वो फैक्टर होगा उनके लिए जो हेल्पफुल रहेगा उनकी फाइट में, बिकॉज वो बंदा जब इतना हाइट होता है वहां से वो मार रहा है या कुछ कर रहा है तो लगता है इतनी जोर से बंदा दिमाग घूम जाए। तो सही में मतलब ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है हाइट वाला ना। अरे वो हाइट पंच मैंने देखा, ऐसा उन्होंने यूं जो मारा वो बंदे के वो ही निकल गया। क्रेजी यार, सो क्रेजी ब्रो। उनके ऐसे स्टेट है, माइक टायसन वर्सेस जो वो कर रहे थे उसके अंदर भी बोले अगर इनको रूम के अंदर बंद कर दो तो इनके पास वो टूल्स है कि ये वापस निकल सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। वो वाला जो था क्या क्रेजी। अच्छा, माइक टायसन की हम लोगों ने एडिट देखी हुई है, तो माइक टायसन वर्सेस, ये जो वर्सेस है ना, तो हमारे जहन में आया कि माइक टायसन यार। और मतलब जब उन्होंने उसको चूज करा, बोला, उनकी एक एक्सप्लेनेशन दी, हाँ मैंने बोला तो वाओ क्रेजी सीन हो गया। वोटेड तो है बंदा। अच्छा, वो एक डैनियल जो उससे इनकी थोड़ी वर्सेस वाला पंगा चल रहा है, जो उन्होंने डैनियल करके नेम कुछ करके लिया है, और फिर उसके बाद वो वर्सेस वाला, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इतना एक दूसरे से नफरत करते हैं ब्रो ये लोग, क्रेजी है। मतलब होता है ना, आपको किसी को देख देख के गुस्सा आ रहा था, वो वाला इन लोग का पंगा लग रहा है मुझे उनसे ना। तो काफी क्रेजी थे इनके सारे एडिट्स जो है, लिटरली हर बंदा तो गोट कह रहा है, तो ऑब्वियसली फिर आप लोग समझ ही सकते हो ना। बड़ा ही मजा आया मुझे इनके एडिट देखने में। आप लोग को वीडियो कैसे लगी कमेंट्स बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।